नमस्कार। तो आज की जो डिस्कशन है दैट्स ब्रॉडली on and it would be more relevant to people who are yet to retire 10-15 years at least from retirement, say around 45-50 years of age या उससे जितना भी कम 25 से 50 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये टॉक, आज की जो टॉक है वो रेलेवेंट रहेगी। वैसे तो एवरीवन वुड बी एबल टू ड्रॉ समथिंग आउट ऑफ दिस, बट जिन लोगों को गवर्नमेंट पेंशन नहीं मिलती है या जो इस तरह का काम या व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट पेंशन नहीं है, दे वुड एक्चुअली would benefit most from the stock. One second, the important thing is that in times to come, uh, India as an economy, as a society, as a nation is going to face a pension pandemic, because जो हमसे just पहले वाली generation थी, let's say my father and prior to that, they were mostly government employees in receipt of government pension. बट ऑफ लेट जो 1985 के बाद में जो बॉर्न हुए, जो भी लेट 30s में हैं या उनसे भी जो यंग है, उनमें अगर डिफेंस फोर्सेस के परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि 2004 के बाद से गवर्नमेंट हैज स्टॉप गिविंग पेंशन इवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज एंड द अलाइड एटसेट्रा। So how do we go about handling and developing a very broad financial plan so that once you reach that age where you can't work in the sense, you are not able to put in labor and then earn, तो भी आप ऐसे क्या चीजें करें आज से कि आपको financial sufficiency रहे and you're able to make sure that you are there, you have everything working for you. So I'll be sharing a presentation also. All the presentation is very simple. There's hardly, I think, 5 slides, very broad points. But that's just for keeping us oriented. If the first thing I would say, which is actually one of the most important and most pertinent, which any individual who is wanting to make sure that they have a very happy and comfortable and secure retirement, that would be home ownership. आप सबसे पहले अपना घर खरीदिए, irrespective, and I am repeating this, irrespective of where it is located, वो चाहे फरीदाबाद में हो, धारुएड़ा में हो, जयपुर में हो, नोएडा एक्सटेंशन में, अगर आप एनसीआर की बात कर रहे हैं, वो हिसार में हो, भोपाल में हो, लखनऊ में हो, बठिंडा में हो, कहीं भी हो। कहने का मतलब ये है कि मैसूर में हो, बीकानेर में हो, पटना में हो, रांची में हो, आपको अपना घर खरीदना है। और घर खरीदने के क्राइटेरिया ये नहीं होने चाहिए कि वहाँ क्या रेट बढ़ जाएगा, क्या कम हो जाएगा, जो एक एक जनरली आपको एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है फॉर, एंड दैट्स अ मार्केटिंग नैरेटिव, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट नैरेटिव। होम इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज अ इंडिविजुअल। वो आपको खरीदना है और वो घर खरीदने के बाद में आपको वहां से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें शुरू होंगी। सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स व्हेन यू आर वांटिंग टू बाय अ होम? Buy a home which is as per the size you need. If let's say you're a family of 2 or 3, you have 2 kids, after retirement also you hope that your kids will come and meet you. So एक आपको बेसिक अगर 3 bedroom की जरूरत है, 3 bedroom खरीदिए। आप बैंगलोर में काम करते हैं, यू कांट अफोर्ड अ हाउस इन बैंगलोर, नो प्रॉब्लम। You like Mysore, go and buy in Mysore. You belong to Rohtak, go and buy in Rohtak. But buy a house which meets your requirements. Nowadays, and this is a fact, आप search करेंगे, even in small mofussil towns like Rohtak, Hazaribagh, Bikaner, Bhatinda, etc., there are modern apartments coming up, RERA approved projects coming. Go there, understand, एक safe investment कीजिए, and all you need to see is cities which have a good educational infrastructure and a health infrastructure. And subsequently आप उस शहर में शुरू में अभी ना भी रहें, कोई बात नहीं, आपकी नौकरी आपको, आपका काम आपको कहीं भी ले जा सकता है, perfectly all right. Your home ownership will give you a lot of security. तो आप रेंट से रेंट सब्सिडाइज कर लीजिए, आप बीकानेर में घर खरीद लीजिए, बैंगलोर में काम कीजिए, आप बीकानेर के घर से
बैंगलोर के घर का रेंट सब्सिडाइज कर लीजिए. दिस इज if you are not able to buy something in Bangalore. If you are able to buy something in Bangalore, if your means permit, then please go ahead and buy something in Bangalore. If your means permit, go and buy something in Gurgaon. जहां आपका मीन परमिट करता है, जहां आपकी इनकम्स आपके चीजें परमिट करती है, the first step is that you'll buy a home. Important facts: please try and buy a home as close as possible to completion, या ऐसे एंटिटी से खरीदें जहां वो आपको कंप्लीशन मिलने की लगभग अश्योरेंस हो. यू आर नॉट चैलेंज्ड बाय दैट फैक्ट कि कंप्लीशन होगा या नहीं होगा. फेयर प्राइस. सो 2 points: completion or nearing completion, fair price. Point 3, refer to the first 2 points. And it has been proven. I have been in the industry for a very long time. I can very confidently make this assertion that the day you purchase a house and उसके बाद में अगर आप मेहनत करके उस घर का लोन अगर कायदे से जल्दी से चुका पाते हैं, यू नो, तो that itself will give you a lot of security, lot of peace of mind, lot of confidence, and give you a lot of strength to move ahead. As of today in modern economy, even if you want to be an entrepreneur, you buy a home at 30, repay your loan by the time you're 40. You have purchased a home in a place like Bhopal. You can go there, work from home, establish your business because you have a loan-free home. So, इस होम ओनरशिप को दो तरह से समझे. पहला, आपको घर खरीदना है. दूसरा जो आपको करना है वो ये है कि आपको उस घर की होम लोन जल्दी पे करना है. 20 साल का लोन शुरू में लेना पड़ सकता है फॉर बीइंग एबल टू बाय एन एडिक्वेट हाउस, बट रीपे द लोन एज सून एज पॉसिबल. चाहे महीने का 500 रुपए एडिशनल ईएमआई दे सकते हैं, दीजिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेन्योर, keep the tenure, keep the EMI, increase the EMI, keep the tenure same. As जितना बीच में कुछ लमसम आता है, prepay some part of the principal. Every year pay an extra EMI. Like this, you will very soon be able to have one property which is completely loan free, which is your property, which cannot be taken by any kind of a economic downturn, which cannot be disturbed, which cannot, which cannot be shaken up. And that is what is going to give you सो मच ऑफ इंटरनल कॉन्फिडेंस कि आप उससे आगे बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाएंगे जहां से आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर महसूस करेंगे और बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस रहेगी. सो और अगर इस पे आप डिटेल में जाना चाहते हैं, हमने इसके ऊपर एक पूरा टॉक कवर किया था वेयर वी हैड काइंड ऑफ कवर्ड कि हाउ यू कैन पे योर होम का जो रिपेमेंट ऑफ लोन है वो जल्दी कर सकते हैं. यू कैन वॉच दैट टॉक ऑन द चैनल. But 2 pertinent points under this: step 1 is be a homeowner wherever your means permit as of today, if you're still not a homeowner. If you're a homeowner and once you acquire the home, repay the home loan of your primary home as soon as possible by making part payments, by making an extra EMI, etc. etc. That's the first step. Second step, term insurance. आप अगर एक अभी वर्किंग एज में है, यू हैव फैमिली लाइबिलिटीज, यू हैव people dependent on you, which could be one child, which could be 2 children, which could be a spouse and 2 children, which could be your parents, etc. You need to have a term insurance at this stage. At this stage, the operative word here is term insurance at this stage. अपना आप adequate term insurance का कैलकुलेशन करवाएं अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ करके. आप हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारे साथ करें. उतने का टर्म इंश्योरेंस आज ले लीजिए. मान लीजिए आपको ये लगता है कि ओवरऑल करके आपको 1 करोड़ का, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए. 2 डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड चाइल्ड, या 3 डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड 2 चाइल्ड. उनकी जरूरतें कितनी हो सकती हैं, एक्सेट्रा. और अब जो बात बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस को आगे बढ़ाते रहने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग आज 1.5 करोड़ की लेते हैं, फिर 2.5 करोड़ करते हैं, फिर नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप आज से 5 साल बाद आपकी जिम्मेवारियां जो आज थी और आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो जिम्मेवारियां कंपैरेटिवली कम हो रही हैं. वाई? बिकॉज इस 5 साल में ऐसी उम्मीद की जाती है आपने कुछ ना कुछ सेविंग्स करी होगी और आपके बच्चों की जो डिपेंडेंस है आपके ऊपर वो कम होती जा रही है. आपने जो एसेट्स क्रिएट किए उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. सो ऑल्दो इन्फ्लेशन डस रिड्यूस द इम्पैक्ट
which would have in case अगर आपकी टर्म इंश्योरेंस को कॉल करना पड़ जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, आप नहीं हो तो, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, उसको आप उसके टेन्योर तक चलाते रहे, around 20 odd years if you're at the age of 30 or 35, and that would be sufficient. You don't need to buy extra insurance after that. Insurance, life insurance, is an expense, but an unavoidable and necessary expense. इसको उसी तरह से हैंडल करें, एक टर्म इंश्योरेंस लेकर के अपनी आज की जरूरतों को और के गोल्स को मीट करने की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद एक समय आएगा आपकी वो जरूरतें जब कंप्लीट हो जाएंगी. लेट्स से माय डॉटर इज 9 years नाउ, I have taken a term insurance. By the time she is 25, then I can simply stop paying the term insurance because now my daughter is self-sufficient. और अगर मैंने उसके मैरिज के लिए कोई एसेट्स क्रिएट किए, those assets are existing. So then I don't need to depend on the term insurance for securing my child's financial needs. So term insurance को as a expense मानते हुए, उसकी कैलकुलेशंस को समझते हुए आप एक टर्म इंश्योरेंस लें, और उसके बाद उसका अमाउंट या उसका सम इंश्योर्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यूजुअली स्पीकिंग. बट द स्टेप 2 इज दैट यू टेक अ टर्म इंश्योरेंस सो दैट इन केस something happens to you, then your primary asset, that was your home, and the other needs which are required there are there, and you are now moving towards a pensionable age. And why it is important to keep it limited? Because insurance otherwise is an expense. It is not a vehicle for instrument. You should not be looking at insurance for instrument, but you should be adequately covered during your working life. जब आप काम करके पैसा कमा रहे हो और आपके डिपेंडेंट्स हैं जो आप पर आश्रित है, उस वक्त में टर्म इंश्योरेंस जरूरी है. इट प्रोवाइड्स यू द रिक्वायर्ड सेफ्टी. स्टेप 3, एंड थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ सिप्स के अंदर पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल आई हैव पुट इन स्टेप 3 इज कंसिस्टेंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. मेक इट अ हैबिट. आप जो भी कमाते हैं उसमें से आप आज कुछ सेव करिए, और उस सेविंग को आप इन्वेस्ट करिए. मंथली आप इन्वेस्ट करेंगे 5,000 rupees a month saved with a recurring deposit of State Bank of India, which is the safest investment, at a rate of 5% per annum. After 30 years will give you 43,78,000. And this would be 18 lakh आपका खुद का, 23,78,000 रुपए ब्याज का. That means आप अगर consistently safest investment भी करते हैं, which is and State Bank of India, which is a nationalized scheduled bank का recurring deposit at 5,000 rupees a month, then also you start generating assets for meeting your pension requirements when you are not in a position to earn and pay for yourself. So the operative word here is consistent. हर साल आपकी इनकम्स में थोड़ा बढ़ोतरी होती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए. अब इसके बाद देन इट इज एंटायरली अप टू यू, योर कंफर्ट लेवल, योर डिस्कशंस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, योर कंफर्ट, द फैमिली कंफर्ट लेवल ऑफ योर स्पाउस, कि अब आप ये पैसा आरडी में लगाते हैं विच इज द लोएस्ट रिटर्न बट आपको मेंटल सेफ्टी बहुत देता है, या आप ये पैसा प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, या आप ये पैसा टॉप 10 कंपनीज ढूंढ करके अपनी तरफ से उनके डायरेक्ट इक्विटीज में लेते हैं. The important and the operative word here is being consistent. Being consistent, every month you have to make an investment, and being consistent every year you have to increase your investments. So the moment you start hitting that, the moment you start doing these two things over a period of time, you will actually create good assets from which, when you are not earning, when you need your pensions, you will be able to withdraw amounts and make sure that you do not have any kind of a lifestyle compromise at that stage. So first was you buy a home, get a and or usko loan free कीजिए. Second was buy an adequate term insurance. Third is consistent savings and invest. What is the fourth point?
फोर्थ पॉइंट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब वैसे तो सभी कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, इसके सूक्ष्म पॉइंट्स क्या है? इसके सूक्ष्म पॉइंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन एडिशन टू योर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, या अगर आपको ईसीएचएस लागू है तो वो। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत छोटा स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, आपका ईसीएचएस कवर अगर आपके पास है, तो डोंट नीड टू टेक अ 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। नहीं, आपको टॉपअप के ऊपर भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज what you're doing right now is you're building an insurance का coverage over a period of time so that when you actually need it in your old age, जब शायद आपके पास में आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस का, बिकॉज आप काम नहीं कर रहे होंगे, या अगर आप ईसीएचएस कवरेज में हैं तो ईसीएचएस का कवरेज की वजह से आपको उतने हॉस्पिटल्स आपको उस तरह का एक्सेस नहीं दे रहे होंगे मेडिकल हेल्थ केयर को, तब तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस धीरे 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 बढ़ाते 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 आप उस स्टेज तक ले जाएंगे कि आपको और आपके स्पाउस को, यूजुअली स्पीकिंग, दिस काइंड ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस वुड be able to provide an adequate cover for you. So, important point one, start small health insurances. Every year make small increases. Maybe आजकल कायदे का 5 लाख रुपए का स्मॉलेस्ट कवर मिलता है, वो लीजिए। उसके अंदर अगले साल आपको नो क्लेम बढ़ जाता है, वो बढ़ा लीजिए, प्लस में भी 50,000 पे लाख रुपए का कवर बढ़ा लीजिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करते रहेंगे, यू विल बी एडिक्वेटली कवर्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। एंड देन जब आपको लगता है टॉप अप, ये सब चीजें आप सब्सिक्वेंटली ले सकते हैं। कीप टॉकिंग टू योर एडवाइजर टू हेल्प यू विद दिस एडिशनल एस्पेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्ट स्मॉल हेल्थ इंश्योरेंसेस, बिल्ड इट अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मीन वाइल बीच में अगर आपको कुछ लगता है किसी और इंश्योरेंस का अच्छा कोई स्कीम आता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी दैट इज अलाउड। प्लीज ऑप्ट फॉर दैट आफ्टर डूइंग योर डिलिजेंस एज कंपेयर टू आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। बट हेल्थ इंश्योरेंस में छोटे से स्टार्ट करें और आगे बढ़ाएं। एकदम से बहुत बड़ा कवर लेने की जरूरत नहीं, स्पेशली इफ यू आर यंग, इफ योर overall health is okay, if you take good care of yourself, and if you have corporate health cover or Fauji health cover or ECHS as well. So that is the fourth step as to how you will build for your pensions. Final, NPS tier 1 account. अगर आप अभी ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर पैसा 50,000 रुपये, विच इज allowed, wherein you can save taxes on an additional investment oblique, I mean, sum of 50,000 rupees towards NPS tier 1 account, National Pension Scheme tier 1 account। तो इसमें आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप 20% ये टैक्स ब्रैकेट में है तो भी आपको 20% का बचत वो होती है आज की डेट में टैक्स की। और अगर एनपीएस आपको 7% का भी रिटर्न देता है तो भी दिस वर्क्स आउट टू 27% रिटर्न, which by any standard is a very, very handsome rate of return. If you're in a higher tax bracket, you save more, so you go up till 37. तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनपीएस के अंदर टैक्स सेविंग अलाउ करती है, जब तक आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इनकम्स एंड अदर सेविंग्स एंड अदर स्टेप्स यू हैव टेकन, you should not avoid, or you should not take a step of not investing in NPS tier 1 account just because someone is saying कि इक्विटी में ज्यादा पैसा मिलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिलता होगा, that is only if you are comparing it with the NPS return. The tax saving cannot be ignored because that is also a part of your return. उतना पैसा आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया अपनी तरफ से। So these are the 5 steps. I'll stop this presentation. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.